हेलो स्मार्ट ट्रेडर्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, जहां हम बनाएंगे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स को आपके लिए आसान और सरल। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन एंड से गुड बाय टू ऑल योर वरीज एंड कंफ्यूजन्स रिलेटेड टू द स्टॉक मार्केट। हम सब ने सुना है क्रूड ऑयल एक ऐसा फ्यूल है जो ग्लोबल इकोनॉमी को चलाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं व्हाट इज क्रूड ऑयल ट्रेडिंग? टू बिगिन विद, इट इज वन ऑफ द वाइडेस्ट कंज्यूम्ड कमोडिटी एंड क्रूड ऑयल ट्रेडिंग ही सबसे लिक्विड ट्रेडिंग पूरे कमोडिटी सेगमेंट में जानी जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंजेस टू ट्रेड इन क्रूड ऑयल। तो क्या आप जानना चाहते हैं इस ट्रेडिंग के बारे में? तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, क्योंकि हम आपसे क्रूड ऑयल ट्रेडिंग के बारे में ही बात करेंगे। कमोडिटी मार्केट में अगर कोई एक प्रोडक्ट है जिसने प्राइस में ड्रामेटिक चेंजेस दिखाए हैं, एंड दैट प्रोडक्ट इज क्रूड ऑयल। Some important features of crude oil trading are: crude oil is one of the most liquid commodities in the world. आप fundamental and technical analysis दोनों यूज कर सकते हैं to understand crude oil futures trading. अब understanding and fluctuations in demand and supply for crude oil is crucial for making the most profits. आप जानते हैं उन फैक्टर्स के बारे में जो इस ट्रेडिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। Let's begin with the Organization of Petroleum Exporting Countries, that is OPEC. आउटपुट और सप्लाई दोनों इंपैक्ट करती है क्रूड ऑयल मार्केट्स की। ऑयल डिमांड में आ रहे चेंजेस विद इन इमर्जिंग एंड डेवलपिंग कंट्रीज प्ले अ हैंड इन क्रूड ऑयल मूवमेंट। ऑल्सो द अमेरिकन क्रूड ऑयल एंड प्रोडक्ट इन्वेंटरीज इंपैक्ट दिस मार्केट। द रिफाइनरी यूटिलाइजेशन रेट इज ऑल्सो रेलिवेंट हियर। अलॉन्ग विद द जियोपॉलिटिक्स ऑफ द ग्लोब भी क्रूड ऑयल प्राइसेस को अफेक्ट करती है। स्पेक्युलेटिव बाइंग एंड सेलिंग भी ट्रेड पर बहुत असर डाल देते हैं। एंड लास्टली, वेदर कंडीशंस एंड नेचुरल डिजास्टर्स आर वेरी मच रेलेवेंट। अब जानते हैं इंडिया में क्रूड ऑयल ट्रेडिंग होती कैसे है। इंडिया में क्रूड ऑयल ट्रेडिंग दो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज द मेन क्रूड ऑयल एंड सेकंड इज क्रूड ऑयल मिनी। क्रूड ऑयल मिनी is more widely traded among traders due to its low lot size, and hence the margin required is lot less. Today, India's own multi-commodity exchange is the world's largest exchange for silver. It ranks second in gold, copper, and natural gas commodity trading, and third in crude oil futures. More than rupees 3,000 crores of crude oil futures trading takes place in the MCX every single day, and it is the most actively traded commodity on the exchanges. अब जानते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर भी क्रूड ऑयल में कैसे ट्रेड कर सकता है। Definitely, it requires minimal investment and you have maximum opportunities to earn high profits due to the high leverage. लेकिन crude oil futures are not only highly liquid, they're also highly volatile. It's hard to foresee price movements. अगर आपका ब्रोकर commodity broking service offer करता है and it is affiliated with MCX or NCDEX, you can consult them for crude oil futures trading. Initially, it's better to start with experts and gradually start trading on your own. Therefore, TradeSmart आपसे यही रिक्वेस्ट करता है कि अगर आप क्रूड ऑयल ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इससे पहले बहुत जरूरी है कि आप कमोडिटी मार्केट को समझें और इस ट्रेडिंग का इन डेप्थ नॉलेज लें। इसके लिए आपको चाहिए एक्सेप्शनल स्किल्स व्हिच कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस, एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट गवर्न्स द कमोडिटीज मूवमेंट, द नेचर ऑफ द क्राउड दैट डोमिनेट्स द मार्केट, द लॉन्ग टर्म प्राइस हिस्ट्री एंड द फिजिकल वेरिएशंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन वेरिड ट्रेड्स। So friends, ये था about all the crude oil trading that is governing the market. For more such videos, keep watching and keep sharing our videos. Thank you. For future updates and queries, visit social media handles of TradeSmart.